At the Karsavan Matridom Day event, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren announced that the government would form a committee to identify the families of martyrs and ensure they receive due respect. He highlighted that Karsavan was a place of sacrifice where members of the Adivasi community gave their lives for Jal, Jungle, Jameen, water, forest, land. Soren noted that thousands of people from across the state had gathered to pay tribute, emphasizing that such sacrifices could never be forgotten. He explained that the committee's purpose was to trace the families of those who lost their lives and honor them appropriately, reinforcing the government's commitment to preserving the legacy of the martyrs. खरसवा के इस शहीद स्थल पर इतना बड़ा जनसैलाब और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा किसी से छुपा नहीं है। आज का ये दिन खरसवा के शहीदों को नमन करने के लिए कोल्हान ही नहीं, राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और हमारे आदिवासी समुदाय के वीरों ने यहाँ के आदिवासियों के हक अधिकार, यहाँ के मूलवासियों के हक अधिकार, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। यह स्थल इतिहास के पन्नों का वो हिस्सा है जो ना कभी भूलने वाला है ना खत्म होने वाला है। आज हम लोग हर साल की भांति इस साल भी शहीद को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे परिसर में खरसवा के इस Telangana Minister Uttam Kumar Reddy stated that the Palamuru Ranga Reddy project requires over rupees 80,000 crore for completion. During a presentation at Praja Bhavan on water allocations, he explained that despite spending rupees 27,000 crore during the Bharat Rashtra Samiti's tenure, not even a single acre received water. He questioned how the project could be considered 90% complete with just that expenditure. Uttam clarified that since the new government took charge, rupees 7,000 crore has already been spent on the project. He emphasized the massive financial requirements still ahead to the fully complete to the project and deliver its intended benefits to farmers and communities. కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు చాలా కాలం తర్వాత ప్రెస్తో మాట్లాడుతూ మరి వాళ్ళు పాలమూరు రంగారెడ్డి విషయంలో 90% పనులు చేసినామని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు. మేము 90% పనులు చేసినాం, మరి మీరు వచ్చిన తర్వాత తట్టేడు మట్టి ఎత్తలేదు, రూపాయి ఖర్చు చేయలేదు, మీరు పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు, మీరు కృష్ణా బేసిన్ పై ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా మరి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారని ఒక ఆరోపణ చేయడం జరిగింది. ఇది పూర్తిగా అబద్ధం. నేను వాళ్ళు చెప్పిన విషయాల్లో కొన్ని పాయింట్ టు పాయింట్ రిబట్టలు ఇచ్చి దెన్ విల్ గో ఆన్ టు ద ప్రెజెంటేషన్. వాళ్ళు జీవో ఇచ్చింది
10th June 2015 జియో ఇచ్చింది. ఈ పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 35,000 కోట్లని. వాళ్ళ హయాంలో ఖర్చు పెట్టింది 27,000 కోట్లు. ఈరోజు పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడానికి పూర్తి స్థాయిలో డిస్ట్రిబ్యూటరీ ఛానల్స్, ఆయకట్టు కాలువలు, ఆయకట్టు పనులు అంతా పూర్తి చేయడానికి మేము లెక్కలతో సాగు పెడతాం 80,000 కోట్లు దాటుతుంది. మరి 80,000 కోట్ల పనులకి 27,000 కోట్ల పనులు చేసి మేము 90% పనులు చేయడం అనేది ఎంత సత్యదూరమైన విషయమో యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకం గమనించాలి. 2015లో జియో ఇచ్చి డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ 7 ఏళ్ల తర్వాత 13 సెప్టెంబర్ 2022 సంవత్సరంలో సెప్టెంబర్లో 13వ తారీఖున పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు మొదటిసారి సిడబ్ల్యూసికి డిపిఆర్ సబ్మిట్ చేసింది. దాని ఖర్చు చూపెట్టిండ్రు 55,000 కోట్లు. ఆ 55,000 కోట్లు కూడా ఆయకట్టు కాలువలకు అయ్యే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కాస్ట్ లేదు. మరి మనం ఏదో పని చేయనట్టుగా ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు కానీ తర్వాత హరీష్ రావు గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఆ విషయానికి వస్తే మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుపై 7,000 కోట్లు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. మరి వాళ్ళు ఆ రోజు దిగిపోయినప్పుడే 27,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పాలమూరు రంగారెడ్డి ద్వారా ఒక్కెకరానికి కూడా ఆయకట్టుకి నీళ్లు ఇవ్వలేదు. Railway Minister Ashwini Vaishnaw announced that India's first Vande Bharat sleeper class train would operate on the Kolkata to Guwahati route. He explained during a press conference that the fares had been carefully fixed to remain substantially lower than the cost of air travel between Guwahati and Howrah. Vaishnaw emphasized that this initiative was designed to make travel more affordable and accessible for passengers while maintaining comfort and efficiency. He highlighted that the new sleeper class service would provide a modern travel experience, ensuring convenience for long-distance travelers. The minister underlined that the government's focus was on balancing affordability with quality, thereby offering citizens a reliable alternative to expensive air travel. एयरलाइन से सब्सटैंशियली कम होना चाहिए. एयरलाइन से सब्सटैंशियली कम होना चाहिए. तो गुवाहाटी हावड़ा का माने गुवाहाटी कोलकाता का जनरली एयरलाइन का फेयर होता है 6,000 to 8,000 रुपीस के आसपास का होता है. 6,000 to 8,000, 10,000 भी पहुंचता है. इसमें 3 AC में गुवाहाटी से हावड़ा का रहेगा 2,300 रुपये. बहुत कंफर्टेबल है, विद फूड है. 2,300 हावड़ा टू गुवाहाटी थर्ड एसी का 2,300 के आसपास का रहेगा प्लस माइनस. और 2 AC का रहेगा करीब 3,000 रुपीज. बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मिडिल क्लास का ध्यान में रखते हुए किया गया है. फर्स्ट एसी का 3,600. देखो अब नए तरीके से सोचना है हमें. अब रेलवे का रिफॉर्म्स की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पीएम साहब ने जिस तरह से रिफॉर्म्स का एक पूरा एक्सप्रेस चलाई है, इनकम टैक्स का नया कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नए कानून, पूरा रिफॉर्म हुआ, लेबर रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, हर तरीके से जीएसटी में. In Pune, Maharashtra, Minister of State for Civil Aviation Muralidhar Mohal reiterated that his party would contest the upcoming elections in alliance. He emphasized that Shiv Sena and RPIA were confirmed partners and that they would fight together. Mohal explained that coordination with RPIA regarding seat sharing had already taken place. He further stated that any decision taken by Chief Minister Devendra Fadnavis and Eknath Shinde on seat distribution would be acceptable to all alliance members. He
His remarks highlighted unity among the partners and underscored the commitment to a collective strategy for the elections, reinforcing the alliance's stance from the very beginning. कहा था कि हम अलायंस में लड़ेंगे। शिवसेना हमारा अलायंस पार्टनर है, आरपीआई हमारे अलायंस पार्टनर है, तो हम तीनों एक साथ लड़ेंगे। पहले दिन से कहा, आज भी हमने यही कहा कि आरपीआई से हमारा पूरा जो जितने सीट उनको देना है, हमें उसमें जो कोऑर्डिनेशन होना था वो पूरा हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो आरपीआई का तो वो तो हमारे साथ लड़ेंगे, लेकिन शिवसेना का थोड़ा सीटों के जो फिगर से जो संख्या है उस पर थोड़ा कम ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि शायद वो भी कल तक प्रॉब्लम सॉल्व होगा और शिवसेना हम भी एक साथ लड़ेंगे। गठबंधन के लिए चर्चा में कौन कौन है अभी इस वक्त? नहीं, गठबंधन की चर्चा में हमने तो यहाँ पे तो लोकल लेवल पे हम सभी चर्चा करें, लेकिन देवेंद्र जी और शिंदे साहब दोनों जो निर्णय लेंगे तो मुझे लगता है कि हम सबको वो प्रस्ताव उनका स्वीकार है। इलेक्शन चूँकि आप कल इलेक्शन में उतर रहे हैं, क्या वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप वोट मांगेंगे लोगों से? और नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि पिछले 5 साल एज अ रूलिंग पार्टी करके पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी ने हमने काम किया है, और पिछले 10 साल से माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार हो, राज्य में माननीय देवेंद्र जी की राज्य सरकार के माध्यम से हो, एक ट्रिपल इंजन की सरकार ने बहुत काम पुणे में किया है। जैसे मेट्रो हो, जैसे रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट हो, जैसे इलेक्ट्रिक बसेस हो, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हो, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो, पुणे के हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट हो, ऐसा बहुत काम हमने पिछले 10-12 साल में 11 साल में किया है। तो मुझे लगता है कि यही मुद्दा लेके हम फिर से लोगों के सामने जाएंगे कि हर बार हमने पुणे के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, समर्थन दिया, और उसके बावजूद ही हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता में थे, राज्य सरकार में भी, जब विधानसभा के चुनाव में भी पुणेकर हमारे साथ थे, लोकसभा के चुनाव में भी पुणेकर हमारे साथ थे। तो मुझे लगता है कि जिस कारण से, जिस अपेक्षा से पुणेकर हमारे साथ थे, हमने उनका विश्वास जो उन्होंने हमारे पे व्यक्त किया था, तो विश्वास को साथ करने के लिए पूरा प्रयास हमने किया। पुणेकर जानते हैं, और यही विकास का काम लेके हम जाएंगे कि आपने हमें मौका दिया था, आपने हमें काम करने का जो मौका दिया था, जिसके लिए आपने हमें मौका दिया था, वो काम हमने पूरा किया है। इसको पूरी तरह से Bihar's Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary marked the beginning of 2026 by meeting the public and party workers in Patna. On the first day of the new year, he extended warm greetings and interacted with the people, reinforcing his connection with the grassroots supporters. The occasion was symbolic of his outreach efforts, aiming to strengthen ties with the citizens and energize party cadres at the start of the year. His presence underscored the importance of direct engagement and festive goodwill in political life, setting a tone of inclusiveness and optimism for the months ahead. At Rani Danga in Siliguri, West Bengal, SSB Director General Sanjay Singhal attended the curtain raiser of the All India Police Handball Cluster. He expressed pride that the SSB had been entrusted with the responsibility of organizing the second handball and basketball competitions. During the event, the mascot and a promotional video clip of the upcoming competition were released. Singhal highlighted that the gathering marked an important step in showcasing the sporting spirit of police forces across the country, while reinforcing the SSB's commitment to successfully hosting the event. थी कि सेकंड हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन एसएसबी करेगी, और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। आज का ये कार्यक्रम इस महत्वपूर्ण समारोह का आगाज है, जिसमें आज आपके सामने मैस्कॉट और एक वीडियो क्लिप जारी किया गया है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि अब तक करीब 81 टीमों ने अपनी सहमति दे दी है, और बाकी कुछ टीमों से अभी सहमति आनी प्राप्त शेष है। और यह एक बड़ा आयोजन है जिसमें करीब 1500 से ऊपर के खिलाड़ी विभिन्न सीएपीएफ से, विभिन्न सीपीओ से और
सभी स्टेट पुलिस से भाग लेंगे। In Jamshedpur, Tata Steel Managing Director T.V. Narendran celebrated the new year with the city residents and shared insights on the industry's performance. He noted that India is maintaining a 7% GDP growth rate, which he described as positive for the country. Narendran highlighted that the steel consumption is growing at 8 to 10%, translating to an annual demand of 10 to 15 million tons. With production also on the rise, however, he acknowledged that exports are not performing well due to China's aggressive presence in the global market. His remarks reflected optimism about domestic growth while recognizing challenges in international trade. ठीक है, हाँ। तो जैसे आपने देखा कि ऑलमोस्ट 7% जीडीपी ग्रोथ में चल रहा है, वो अच्छा है देश के लिए। और स्टील कंजम्पशन का ग्रोथ भी 8 to 10% लेवल में चल रहा है। तो उसका मतलब हर साल में ऑलमोस्ट 10 to 15 मिलियन टन का स्टील कंजम्पशन बढ़ रहा है। पर उसके साथ स्टील का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। टाटा स्टील का भी देखिए तो कलिंगनगर में 5 मिलियन बढ़ गया, JSW, JSPL सबका तो बढ़ रहा है। तो और एक्सपोर्ट का मार्केट तो अभी तो नहीं है, क्योंकि चाइना बहुत एग्रेसिव है एक्सपोर्ट मार्केट्स में। तो इसीलिए जब भी इंडिया में थोड़ा सप्लाई ज्यादा होता है, प्राइस थोड़ा कम होते जाता है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि पिछले साल में 2025 में स्टील प्राइस जो है, हॉट रोल्ड कॉइल का प्राइस ऑलमोस्ट 47,000 रुपीज पे थे। तो वो सबसे लोएस्ट पिछले 4-5 साल में लोएस्ट लेवल पर था। तो डिमांड अच्छा है, पर उसका असर पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी पर। और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाटा स्टील भी अब देखिए तो हर साल इंडिया में 12,000 करोड़ का कैपेक्स है। तो वो कैपेक्स इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल थोड़ा मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो वो ग्रोथ में एक्सपैंड इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। तो यही इश्यू था। पर अभी आप लोग देखिए At Saraikela in Jharkhand, BJP MP Arjun Munda paid homage to those who lost their lives on the day of martyrdom. He emphasized that the sacrifices made by these great individuals must never be forgotten. Munda remarked that the history written in their blood carries deep meaning and should be remembered in the days ahead. His words highlighted the importance of honoring the legacy of the martyrs and ensuring that future generations continue to recognize their courage and contribution. यह जो एक बड़ा मेला का दर्शन दिख रहा है, ये सबको पता है कि यहाँ हाट बाजार और जुआड़ियों का अड्डा हुआ करता था, लेकिन पिछले 31 वर्षों से लगातार बिना अनुपस्थिति के लगातार हर साल इसके महत्व को, इसके पवित्रता को बरकरार रखने के लिए मुझे याद है 1995-96 में इस शहीद वेदी को बनाने के लिए रात भर जाग करके, हमारे ऐसे बहुत सारे सहयोगी यहाँ पर है जो लोग रात भर जाग करके एक रचनात्मक और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को लेकर के, यहाँ के आंदोलन की ताकत को लेकर के ऊर्जा का केंद्र बनाया। और आज मुझे खुशी है कि जहाँ हजारों की तादाद में लोग आते थे, बाकी समय में औपचारिकता के साथ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे समय गंवाए, लेकिन अब ये ऊर्जा का केंद्र बन रहा है और ऊर्जा का केंद्र बन चुका है। तो Let's watch the closing headlines.